नमस्कार। स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया इसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और ज्ञान पैराडाइज की तरफ से सुलेखा जी आपका स्वागत है और सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। कैसे हम कलर थेरेपी से कर सकते हैं, how to use colors in your life to get the best psychological and emotional benefit out of it. आप ये सोचते होंगे कि जो मैनेजमेंट है या ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पथी, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, बस यही इलाज होता है। यही मैं आप लोगों को सबको इन सेशंस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हेल्थ है या जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये बहुत सारे तत्वों से बना हुआ है। वो जो मूलभूत पंच तत्व हम बोलते हैं वो तो है ही है, और उनमें भी कहीं ना कहीं कलर्स का इस्तेमाल है, इसीलिए हमारा खून लाल है। तो कुछ ना कुछ ग्रीन क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। तो कुछ ना कुछ कलर्स का या रंगों का हमारे जीवन में हमारे शारीरिक क्षमताओं पर या हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है और कैसे हम रंगों का सही इस्तेमाल करके अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली आज जो पिछले 1.5 साल से हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आगे इस सेशन को का कार्यभार जो है सुलेखा जी संभालेंगी। सुलेखा जी, आप दर्शकों को हमारे आज के एक्सपर्ट के बारे में धन्यवाद बताएं। डॉक्टर मीना जी, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, अनुराधा जयप्रकाश जी, आर्ट की दुनिया में इन्होंने अपना परचम फहराया है। अगर हम बात करें जहांगीर आर्ट गैलरी, जो कि काफी प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी मानी जाती है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, चाहे आप जे स्कूल ऑफ आर्ट ले लें, इन सभी जगहों पे इनके आर्ट को काफी सराहा गया है और सम्मानित भी किया गया है। उतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट्स में इनको कई टॉक शोज के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे इस बारे में बात करती हैं कि कैसे कलर थेरेपी, कैसे रंगों के द्वारा हम अपने ऊपर जो प्रभाव है उनको बदल सकते हैं और उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइए कि कैसे कलर थेरेपी जो है, पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कलर थेरेपी है क्या और कैसे ये हमें प्रभावित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। First of all, I would like to thank both of you for honoring me to be on this prestigious platform. Thank you so much, Dr. Meena, and thank you, Sulekha ji. Today, if you all are aware that it is the World Environment Day, so I would like to start this session with a slogan that is recreate, reimagine, and restore. All this applies to art as well. So, art, there's a very beautiful quote about John Lubbock. Art is unquestionably one of the purest and highest elements in human happiness. It trains the mind through the eye and the eye through the mind. As the sun colors flowers, so does art color life. Beautiful, isn't it? So, I would like to ask the audience and you as well, what is that one thing that never fails to soothe the mind and body during a calamity? It's not hard to guess. What is that one thing that suits our body and mind? Yes, during a calamity. यानी किसी डिजास्टर के समय में वो क्या चीज है जो हमारे मन को शांति पहुंचाती है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ग्रीन, अगर मुझे कोई भी पौधा या पेड़ ऐसे में दिख जाए तो आई वुड ऑटोमेटिकली ट्राई टू क्लिंग ऑन टू दैट फिगर। perfect. Very well said. So we all look out for colors and art it is. So there we go. Yeah, bang on answer. Thank you so much, Sulekha. Thank you so much. So I will now open this platform for the questions that you have already asked me about color. I am a great believer of the power of art.
It can inspire, transform, and protect, also guide us in our day to day life. Talking about color therapy is one of the most popular form of art. And alternative medicines are used to influence the behavior of brain of people through color therapy. It has been immensely used in Egypt, in India, in China for centuries. There's still a lot of research being done on how colors and light affect our health, but researchers are slowly uncovering more information with this regard. In the meantime, there's nothing wrong with using colors around your home. That will lift up your spirits, isn't it? I truly believe that my environment is a reflection of my emotions. One reason why drawing and coloring may be helpful for stress is that the act itself brings us to the present moment. Art can be an excellent exercise in mindfulness. So, colors can just lift up your mood, it can attract attention, it can make a statement, and it can deeply affect one's feelings and emotions. Colors can energize, make you feel warm, cool down. Hence, a right color scheme can create an ambience of elegance, warmth, and convey an image of youthfulness. Colors affect us in numerous ways mentally. Like how Sulekha just told me that when I look at green color, it just peps me up. Green color signifies fertility, purity, calmness. So, participating in art can enable people deal with a wide range of mental ill health and psychological distress. It helps people express themselves without having used words. There are some people who are very shy, they are introvert. So, just an art will communicate what that person wants to express. अनुराधा जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी. I would like to just translate this into हिंदी. हमने दर्शकों को बताया कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर क्लैमिटी हो चुकी है और मैं अपनी कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक पत्ता भी देख लिया तो मैं उस पत्ते की तरफ अपना पूरा ध्यान आकर्षित करती हूँ और वो पत्ता मुझे इंस्पायर करता है, कोई भी ग्रीन चीज. इन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम रहते हैं, आजकल हम सभी लोग घरों में हैं, इसलिए रंगों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा है. हमारे घर में अलग अलग मेंबर्स रह रहे हैं, हर किसी की अलग अलग कलर प्रेफरेंस होती है और किसी रंग से हम उत्तेजित भी हो सकते हैं और किसी रंग से हम बहुत ही काम भी हो सकते हैं, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत भी महसूस कर सकते हैं. इन्होंने ये भी कहा कि रंगों से हमारे फिजियोलॉजी यानी हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव पे और जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो भी उस मूवमेंट में, उस क्षण में हम जो भी सोच रहे हैं, में जा रहे हैं, मतलब अगर हम कुछ भी ऐसा तनाव भरा कोई भाव अंदर लेके आ रहे हैं, तो कलर्स के द्वारा, रंगों के द्वारा हम उन सारे भावों को एक प्रेजेंट मोमेंट में यानी यथार्थ में लेके आ सकते हैं, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं. आई होप कि मैंने इस बात को जस्टिस किया हो. परफेक्ट, परफेक्ट. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया है. I will go ahead regarding some study that had been published by the Journal of American Art Therapy Association. Found that just 45 minutes of creative activity can reduce your stress level regardless of your artistic experience or talent. You need not be a great artist to create something. You can just involve yourself in some activity related to art. So I will give you some tips as the session goes along. Most of us understood the power of art instinctively as kids. Where has it gone when we grew up as adults? Virtually, as children,
we found joys in sculpting various play dough जो हम हमारे घरों में हम आटा the wheat flour that we make as kids we have made shapes out of it, isn't it? Painting something with fingers or drawing with crayons or any material that comes our way, we have created art as kids. So art therapy has widely been practiced for many years, both formally in a therapeutic context. So decades ago, psychiatrist Carl Jung recommended coloring mandalas. Have you all heard about mandalas? Yes, yes, yes. I had an opportunity to go for a mandala workshop. It was amazing. Yeah, I It have a developed a book lot at of home. conversation, I must say. Yes. so he perceived that drawing mandalas had a calming effect on his patients while facilitating their processing of thoughts and emotions. So, do you want me to Mhm. go ahead about how it has helped in ailments? How color therapy has helped in Yes, the yes. treatment? So, color therapy Yes, please. is an additional therapy given along with medical treatment to treat different ailments. The therapy is called chronotherapy. It is done by showing different colors and shining the appropriate color on particular area of the body. The results of the color vary Mhm. from person to person. Let's say, for example, violet. Violet color has been used over parts of the body. The vibrations of violet color are of high spiritual content, and it would be a waste of these wonderful vibrations if it is used below your hips. Violet color brings relaxation and stimulates the flow of subtle energies throughout the psychic centers and the nervous system. Talking about pink, a soft and tranquil color, pink can inspire a calming sense of peace and balance. For example, I read an article of 2008 where in the prisons of Texas, the inmates were dressed in pink simply because pink is said to reduce aggression. Alexander Soares did extensive research into the effects of the colors on emotions at the Naval Correctional Facility in Seattle and named it after the institute directors Baker and Miller. Sauce pink or tank pink is a tone of pink which has been observed to reduce hostile, violent or aggressive behavior. It was originally created by mixing 1 gallon of pure white indoor latex paint with 1 pint of red trim semi-gloss outdoor paint. So these are the studies that are made on pink color. Interesting, isn't it? Yes, I just remembered. I mean, I had when I thought that you've come with this topic, I read about a bit about it, and there is this interesting thing that he mentions that even there was an experiment conducted, जहाँ पे एक experiment किया गया था, जहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद एक पिंक कार्ड दिखाया गया था, जो कार्ड आपने अभी बताया, जो पिंक कलर आपने बताया, उस पिंक कलर का नाम P618 रखा गया था और वो एक कार्ड बनाया गया था जिसके ऊपर ये कलर दर्शाया गया था। तो देखा गया कि जो लोग एक रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं, तो उनकी ऑलरेडी हार्ट रेट ऊंची चली गई होती है नॉर्मल से। तो उन्हें जब ये कार्ड करीबन कुछ मिनटों के लिए दिखाया गया, तो देखा गया कि तुरंत से उनका हार्ट रेट, उनका पल्स रेट, ये सब रिड्यूस हो गया। और मुझे जस्ट एक और एक्सपेरिमेंट याद आया कि एक कस्टमर सर्विस एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ पे लोग काफ़ी कंप्लेंट्स लेके आते थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कंप्लेंट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए, तो दे जस्ट वेंट फॉर दिस कलर थिंग। So a team came, they just painted every wall, everything in pink. हर एक चीज को, यहाँ तक कि जो एक एटीएम की जो मशीन होती है जिसमें हम कार्ड स्वाइप करते हैं, उसको भी इन्होंने पिंक
कवर चढ़ा दिया और देखा गया कि अचानक से जो भी कस्टमर एक हाइपर मूड में आता था और कंप्लेन करने के लिए आता था तो वो एकदम से शांत हो जाता था वो पूरा पिंक देख करके एंड ही यूज्ड टू कम अप विद डिफरेंट कमेंट्स और उस वजह से उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो भी काफी इम्प्रूव हुई तो जस्ट वांटेड टू ऐड इन टू दैट थैंक यू प्लीज गो ऑन There was another experiment that was conducted on two groups of nursing students in the year 2006 2007, and it was studied that one group was a control group, which was not subjected to color therapy, and the second group was the experimental group, which was subjected to the color therapy. After the hospital duties, the respondents were asked to answer the questionnaires pre-test to determine the level of stress after their clinical duty. Blue and pink were used as therapy. The two colors are considered to be having a cooling and calming and soothing effect. Each color treatment was done in separate days. After the pretest, the subjects were then taken to the treatment room. Prior to the treatment, instructions were given to the subjects. They were told to breathe deeply and to stay calm, relax. They looked at the colored wall in the room. They were not allowed to talk to each other or even sleep. So the respondents, the color therapy was conducted for a good 20 minutes. As to control the group, color therapy was not conducted on the control group. After the color therapy, the respondents were asked the questions, the same questionnaire, and the post test, what happened, was given to determine the effect of color therapy on the respondents. You will be surprised to know that it showed tremendous relaxation on the group that used color therapy and a lot of stress and anxiety in the group that was a controlled group. all right Also, there was a beautiful journal that a fact that I saw in an article where the Mental Health Foundation supports using art to improve mental health through the annual Scottish Mental Health Arts Festival, now one of the largest festival of its kind in the world. It brings communities together, artists and activities from all over Scotland to be creative and engage with art events exploring mental health, including visual art, theater, etc. okay so we just had one more question I think Dr. Meena wanted to ask you about the kids especially Right. Yes. नहीं, जस्ट टू समराइज, आपने जो अभी अनुराधा जी ने बताया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और आपने अनुराधा जी जो ऑलरेडी पब्लिश्ड जो बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें बताया बट ये भी मतलब जाहिर बहुत ही हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें इस्तेमाल भी होता है देखिए बच्चों के लिए स्पेशली जो अब आपने बोला कि कलर थेरेपी या कलरिंग या आर्ट फॉर्म्स को मेंटल हेल्थ से जोड़ के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और आपने ये भी कहा कि जो नर्सेज हैं नर्सेज में या हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये देखा गया कि पिंक और ब्लू कलर वो थेराप्यूटिक होता है वो आपको काम करता है आपको शांत करता है और नर्सेज के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि जब एक ग्रुप को ब्लू कलर दिखाया गया और एक को कोई कलर नहीं दिखाया गया और दोनों के मेंटल लेवल्स को फिर नापा गया तो ये पाया गया कि जिन्होंने ब्लू कलर्स को देखा अपना पूरा काम खत्म करने के बाद उनका दिमाग ज्यादा शांत था इसका मतलब कि उनमें थकान कम थी और शायद यही एक रीजन है कि आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर्स का या ओटी में जो हम पहनावा है वो लाइट ब्लू कलर का होता है ऑल्दो जो ड्रेप्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं तो उसके पीछे अगर आपको रीजन पता है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें पर मैं साथ में बच्चों के लिए जो आपने बोला कि बच्चों से संबंधित आर्ट फॉर्म्स तो ये तो खैर हमने देखा ही है कि हमारे बच्चों के करिकुलम में जब वो स्कूल जाना शुरू ही करते हैं तो ABCD पढ़ाने से पहले हम उन्हें एक कागज दे देते हैं और उन्हें कुछ कलर्स दे देते हैं और उन्हें खुला छोड़ देते हैं कि जो तुम्हें ड्रॉ करना है करो
क्योंकि ये एक तरीके का शायद बच्चों के लिए भी एक अपने, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, जैसे हमारा कल ही सेशन में थर्सडे को सेशन में डिस्कस हुआ था कि बच्चे बोल नहीं पाते उतने अच्छे सा, कहते हैं ना सेंटेंस फॉर्मेशन उनका नहीं हो पाता, लेकिन वो ड्राइंग करके चीजें अपने मन की बात बता सकते हैं। तो ये चीज बड़ों के लिए भी है, ये एक तरह का कैथारसिस है कि अंदर जो भी कुंठाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो आर्ट फॉर्म में जब पेपर पे आ जाता है तो वो सब उसके थ्रू निकल जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे डिसेबिलिटीज हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनमें भी आर्ट फॉर्म्स का बहुत इस्तेमाल, आर्ट थेरेपी का यूज किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में अगर हमें और जानकारी दे सकें कि और कौन कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं रोजमर्रा के जिसमें बच्चों के लिए खासकर आर्ट थेरेपी यूज करते हैं। ब्यूटीफुल, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा है। आपने जो जिस तरीके से बताया कि वो नर्सेस को लाइट ब्लू कलर का ड्रेस दिया जाता है एंड ऑल ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक हम अगर हमारे एनवायरनमेंट को अगर हम बहुत नज़दीकी से देखते हैं तो हमें वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी एज अ कंट्री, इंडिया इज सच अ कलरफुल कंट्री, इजंट इट? सो आपने जैसे बोला कि बच्चों को हम अगर पेंसिल या कुछ भी नहीं दें, अगर एक आप एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 6 years अगर आप देखते हो, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हैव पेंटेड द वॉल्स ऑफ द पेरेंट्स rooms with a lot of scribbling and doodling. They don't know, but it's such a free flow. I think मुझे लगता है कि हर अभी अगर हम दूसरे कैटेगरी ऑफ बच्चों का देखते हैं, 8 to 15 years, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं अपने पेरेंट्स से, या दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एलिमेंट, सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और सम यूट्यूबर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दे लुक फॉर डायरेक्शंस। सो अगर हम उनको एक राइट डायरेक्शन दें, लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्ट सप्लाई दें, आर्ट एंड क्राफ्ट गोज हैंड इन हैंड। कभी कभार ऐसे होता है कि दैट द चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू सिट इन वन प्लेस एंड पेंट, but if you give the child some craft activity, then there is a lot of enthusiasm. So I think art and craft goes hand in hand. So you as parents में जब बच्चे मेरे पास मेरे आर्ट इंस्टीट्यूट आते थे, दे यूज्ड टू बी किड्स अराउंड 4 to 5 years। अब वो बच्चों को एक क्लासरूम सेटअप में एक जगह पे बैठ के आर्ट सिखाना के एंजॉयमेंट कहेंगे? No, they want free flow. So I used to always tell the parents that I'm here to guide you. Please provide them with art materials. Let them just play. Talking about colors, what is the most colorful festival in our country? Tell me, what is that होली। color festival? होली। होली। So what do we do in Holi? We just use colors. We enjoy what attracts us, Yes. colors, and we get involved that we forget that the tension, stress, everybody, our lifestyle is full of people going to work, people undergoing stress, some people are happy, some people are sad, some people love exercise. This is our lifestyle. But I think just like Holi, when we all come together as a community and use flowers and enjoy, I think the same thing we should be using colors by painting on a canvas, by using a glass, by using a ply. The sky is the limit. So I think let's use all of this. Simple. If a person is not very artistic and is not able to draw or paint, there are so many activity, adult activity books. There are mandala books. I remember seeing a blog of this very famous blogger Sambhavna Seth. I see her every night in few of her blogs where she has been painting mandalas before she goes to sleep. She's just kept it next to her bedside. I think doing some journaling like this, like having some dream plans, you can keep your sketchbook next to your bed, and you can even paint or draw what you dreamt. These are some of the activities that will help you relax Amazing. and take you off the mind, what the current
the current situation is very bad. There is so much of negativity. हम कितना इसके बारे में नहीं बोलें तो भी आजकल with the third wave हम हमारे घरों में हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स की डेथ या बीमारी की खबर सुनते हैं, एंड इनएविटेबली हमारे बच्चे भी वो सुनते हैं, और क्यों नहीं, दे हैव टू नो. बट इसके वजह से हम पे और हमारे बच्चों पे बहुत मानसिक तनाव हो रहा है. सो हम हमारे माहौल को कैसे चेंज करें? हम जब हमारे माहौल को हम देखते हैं, हम इंटरनेट में सोचते देखते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, देखते हैं हम हमारे घर को कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स द इंटीरियर्स आर ऑल मेड, we cannot do any changes, but yes, some external elements like some colorful walls or like some natural flowers from our garden, these all things you can make to enable you, or the person who's continuously on call day in and day out, he's very stressed क्योंकि वो continuously call पे है. अब work from home है तो it's like work 24/7. So I hear a lot of people complaining कि हम घर से काम कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल ब्रेक ही नहीं मिल रहा है. So हम क्या कर सकते हैं? मंदिर, when we go to a mandir, what is the feeling that we feel there? Do we get any kind of aggressive thinking? We are so calm. There's a lot of discipline also. हम हमारे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई ये मंदिर है और यहाँ पे हम बस we don't even have to make a lot of attempt to stay calm, isn't it? So in the same way, our house, our workstation is also like a mandir. Let us keep it all organized. मंदिर में थोड़ी ना हम अपने चीजों को बिखरे हुए रखेंगे, हम उसको ब्यूटीफुल रखेंगे ताकि हमें दिखने के लिए विजुअली अच्छा दिखे. तो आई थिंक बिल्कुल, यहाँ तक कि मैंने एक पढ़ा था सॉरी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इवन जब हम खाने की प्लेट को जब लेते हैं हाथ में और हम देखते हैं कि हमने कितने अलग अलग प्रकार की सब्जियां उसमें हैं, और माइंडफुलनेस एक एक्सरसाइज में ये भी बताया गया था कि कॉन्शियसली देखिए उन कलर्स को कि क्या इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें रखे हैं. कि अगर टमाटर पड़ा है तो आप देखिए कि ये टमाटर है और ये लाल है, अपने आप से कहिए कि ये लाल टमाटर है, ये कहिए कि ये ग्रीन बीन्स हैं. तो जब आप अपने आप से बात करते हुए उसको देख रहे हैं तो वो आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट की ओर यानी यथार्थ की ओर आकर्षित करता है, और आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जो कि काफी हेल्पफुल है आपकी पाचन शक्ति के लिए, जो कि अदरवाइज अगर आप खाने की तरफ नहीं देखे, भोजन की तरफ नहीं देख रहे हैं और आप किसी और एक्टिविटी में बिजी हैं या फिर आप टीवी देख रहे हैं, तो वो ग्लैंड्स उस समय सेक्रेट नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग विजुअली स्टिमुलेटेड. ये मुझे आपकी कहने से जस्ट याद आया. नहीं सुलेखा जी, आपने ये सही कहा है, ये मेरे घर में हो चुका है. हमारे यहाँ जो मेरे हस्बैंड है उनको हमेशा वो बस फटाफट खाना खाने की आदत थी, एंड देन फॉर सम रीजन ही हैड टू गेट एडमिटेड बिकॉज ऑफ कोविड. और जब वहां पे वो अकेले में रहे और वहां पे जो खाना आता था, और जब कुछ चेंज उनमें आया, अब जब वो वहां से लौट के आए हैं तो अब मैंने देखा है पिछले कई महीनों से, आप जैसे कह रही हैं कि जब आप खाना खाएं तो उसके एक एक कलर को देखें, उसको महसूस करें कि ये मेरे अंदर जा रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर जाके वो लिविंग बीइंग हो जाता है. वैसे वो दिख रहा है आपको कि इसमें कुछ भी नहीं है, बट वंस इट गोज इनसाइड योर बॉडी, एक बार आपने उसे खा लिया, वो आपके शरीर का हिस्सा हो जाता है, और एक तरह से उसमें भी क्योंकि वो कई लिविंग तत्वों में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो भी लिविंग बीइंग हो जाता है. तो इसलिए उसको ग्रेटिट्यूड के साथ खाना और उसको ये रियलाइज करते हुए खाना कि ये मैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्लेवर्स अपने अंदर ले रही हूँ, ये बहुत जरूरी है. और आज मतलब ये बहुत हमें कहना चाहिए कि सैडली ये चीजें हमारे देश में सदियों से थी. एक कोविड के आ जाने की वजह से हम लोग इसको दोबारा से याद कर रहे हैं, दोबारा से अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं. और माइंडफुलनेस की जो आपने बात कही, ये सारा कुछ उसी का खेल है. एवरीथिंग इज अबाउट बीइंग माइंडफुल, बीइंग अवेयर आप क्या कर रहे हैं एवरी मोमेंट. और एक कुछ समराइज करते हुए मुझे लगता है अगर अनुराधा जी आप टिप्स दे दें हमारे दर्शकों को कि चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, आज जो इतना प्रोलॉन्ग लॉकडाउन हो गया है और लोग घरों में हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें आर्ट थेरेपी के अलावा भी कुछ ऐसा वो अपने घरों में आसानी से कर सकते हैं कि जिससे उनका मूड ब्राइटन अप रहे,
जैसे आपने बताया कि आप कलरफुल फ्लावर्स रख सकते हैं, तो ऐसे और भी कुछ छोटे से टिप्स आप बता दें जो आसानी से वो लोग कर सकते हैं अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए। श्योर। इससे पहले मैं ये आंसर करूं, आपका एक प्रश्न था कलर ग्रीन के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ। सो द कलर ग्रीन इज द मोस्ट बेसिक कलर एंड इज यूज्ड फॉर ऑल हीलिंग्स. Hence, you have seen the curtains in the hospitals which has green color. So it has a lot of healing significance. The So color there is is a scientific Yes, there yes, is a scientific basis behind using a green color. Even ऑपरेशन थिएटर में जो शीट्स होती हैं वो भी पहले के जमाने में तो स्पेशली, आजकल डिस्पोजेबल आ गए हैं, बट अभी भी ग्रीन शीट्स यूज किए जाते हैं और उन्हीं को स्टेरलाइज किया जाता है. सो दैट इज योर आंसर. थैंक यू. true, true. So the color is always used for first and last, no matter what you're treating. It starts and finishes with green color. Green color is also one of the safest colors to use. The color can be applied all over yourself and can be concentrated on any part of the body. Green color is the color of balance that harmonizes the flow of prana or universal life force throughout the psychic centers. So I hope this has answered your questions, Dr. Meena. Now, Yes. coming, And green also signifies unconditional love. yes. Heart chakra is all about unconditional love, and it shows green color. Yeah, beautiful. So, how you can use art in your day to day life? As we know that uh, we are all busy with our day to day life's responsibility. We forget that we need and deserve some downtime and some self care. Taking even a few moments on a regular basis to devote to any hobby, you can give more what you need in this area. With art, you have the additional benefit of being left with something beautiful that you have created or something interesting to show or gift to others. It also helps in tapping the state of flow. Some psychologists describe flow as becoming deeply engrossed in an activity, similar to meditation. It The flow can improve your performance, lower your stress levels. You may experience flow when you're practicing painting or drawing. It just takes you out of your mind, as I have told you previously also. Creating an art can take your mind off from whatever is stressing you, at least for a few minutes. It's difficult to keep ruminating on your problems when you're focused on creating something creative. If your problems stay with you, you can incorporate them in your creations. Try to paint your problems or stress. Do it. Once you're done, you will have a clearer head and it will tackle your problems again. Okay? Start coloring. These days, coloring isn't for kids. Adult coloring books are also available, especially for relaxing, for those who don't feel artistic but still want to create beautiful pictures. So, there are a lot of such materials and books available, readily available, where you can color and relax yourself. Draw what you feel, as I told, draw your stress. Drawing literal or abstract representation of what is stressing you out can help you express emotions. And it may be difficult, which may be difficult in putting in words. Simple things like doodling. Some people Yes. like to imitate cartoons, just draw cartoons. I remember an activity that my sister did. She was very much inspired by the emojis that we use these days. Emojis have replaced words. So whenever we feel happy, instead of saying I'm happy, immediately the happy emoji with two hearts or three hearts come around. So she did an activity where she painted only emojis. So we everywhere there are so many things that we can actually incorporate in our day to day life. There are different mediums. Simple collage, I think. Collage is something that you have so many magazines, colorful magazines, so many colorful newspapers, cutouts. Cutting them and creating a landscape, or simply if you love animals, you can create a collage of animals. Again, for COVID patients, now patients who are suffering from COVID
are already in so much of pain and mental trauma. We have to get their focus out of that particular situation, and need not be that they are able to paint or they are able to engage in painting activity. Simply visually watching art and different beautiful landscapes or animals that they like, flowers, insects, like butterfly, colorful butterflies, can also give them a very soothing effect. Okay. Nice. I just Wonderful. recalled one thing. So Sorry, once again, just wanted to share this. And when you said that doodling thing, I just recalled that recently one of my friends shared this, that when they are on the calls for a very long time, instead of having a pen in their hands and taking quick notes while they're doing that, they also keep some colors ready right in front of their notebook. And while they feel stressed or something, they simply pick up that color and start just doodling around on the notebook. And after they are done, they initially reported that initially they didn't feel like making something or something particular, some particular figure, but later on they started developing this instinct of drawing some figure over there. So that was something I wanted to share. We did this during our school and college days. Even students these days, if they find the lecture boring, you will find a Yeah. lot of doodling around their margins. They do doodle it to relax themselves, unknowingly though. But even we have done that during our school and college days, isn't it? yes, True. Thank you एब्सोल्युटली. so much. तो आपने कुछ टिप्स जो हमारे दर्शकों को दिए, हम कलर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कलर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्ट थेरेपी, यानी आपने बच्चों को दे दिया या आप खुद भी बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिलैक्स, जब भी वो उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस लग रहा हो. एक तरीका हो सकता है कि अगर आप कलरिंग में बहुत अच्छे नहीं है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें. तो इससे क्या है, ये भी एक तरह का कैथारसिस है, क्योंकि आज के समय में जब आप घर में बंद हैं तो और साइकोलॉजिस्ट से बात करना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने मन की बात को बाहर निकालने का. और दूसरा है कलर्स का इस्तेमाल आप अपने दिमाग को और अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कर सकते हैं. आप दीवारों के कलर्स तो नहीं चेंज कर सकते, पर्दे भी नहीं इस समय चेंज कर सकते, बट आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं. जैसे आपने कलर्ड फ्लावर्स लगा लिए रूम में, फ्रेश फ्लावर्स लगा लिए, और आप पौधे अंदर होम प्लांट्स रख सकते हैं. किसी दिन आप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हैं या बहुत स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सिंपल टिप है, आपका जो फेवरेट कलर है उस कलर का शर्ट या कॉस्ट्यूम को भी पहन ले. सो वो भी देखा गया है कि वो भी आपके मूड को तुरंत ही अपलिफ्ट कर देता है. तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपने आप को काम रखने के लिए इस दौरान, इस पीरियड में यूज कर सकते हैं. आजकल जैसे गृहिणियां हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है, अच्छे से ड्रेसअप नहीं होती हैं, कुछ नहीं, आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक ही लगा लीजिए, लिपस्टिक का कलर लगा लीजिए, तो आपको जो डिप्रेशन हो रहा है या लग रहा है कि मैं दिन भर किचन में ही हूँ, तो उससे थोड़ी देर आपको बेहतर महसूस होगा और आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगी. तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि अगर हमारे दर्शक फॉलो करें तो अपने मूड को काफी हद तक स्टेबल रख सकते हैं. मुझे लगता है मैंने जो भी समराइज करना था अनुराधा जी का बताया हुआ वो मैंने कर दिया है. सुलेखा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बताइए दर्शकों को सेल्फ केयर के बारे में भी बताइए कि हम ओके वी टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, पर वी हैव टू आल्सो वी आर रिस्पांसिबल फॉर आवर ओन सेल्फ. सो लेट अस care for our own self and engage ourselves in activities that we like to do. If you can. बिल्कुल, ये सेल्फ लव, जो महिलाएं हैं उनके लिए सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, और ये एक पूरा सेशन ही हम रखेंगे, जरूर रखेंगे, जिससे कि उनको इस बात का एहसास कराया जा सके कि जब तक वो खुद अपने आप को खुश नहीं रखेंगी तब तक वो अपने परिवार को खुश रखना उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है. जी सुलेखा जी. बिल्कुल, धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छा समराइज किया डॉक्टर मीना जी. और इसी में हमने, मुझे लगता है कि अभी हमने समय भी काफी ले लिया अनुराधा जी का, तो इसी बात के साथ हम आप सभी से इजाजत लेते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि ये सारे वीडियोस जो हैं, जो भी सारी श्रृंखलाएं हमने की हैं, इन्हें शेयर करें. और आपको जब लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो
हमें कभी कभार ये भी नहीं पता होता कि किसको ज़रूरत पड़ेगी। तो शेयर करने से ही हम एक सही इंसान तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और और मैं भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने से अच्छा है जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स की जो डायलॉग्स हम कर रहे हैं इस सीरीज के तहत, अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और हमारा मकसद यही है कि जो सही इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो पैनिक का सिचुएशन है या डिप्रेशन का सिचुएशन है, बहुत तरीके के मिक्स्ड फीलिंग्स हैं लोगों में, उसको ख़त्म करने के लिए ही हमने ये सीरीज़ शुरू की है। तो वो सीरीज़ हमारे एफर्ट्स इस दिशा में कामयाब होंगे। तो हम कल फिर मिलते हैं। हमारे एक्सपर्ट स्पीकर जो रही हैं आज की अनुराधा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और हमारे दर्शकों को दिया, और हमें बहुत प्रैक्टिकल छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसको कि हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि कलर्स भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। कल हम एक और एपिसोड में मिलेंगे जहां पे हम अपने और अपने बच्चों की आंखों के देखभाल के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार। नमस्कार।